So everyone, let's start. Is there any other doubt from the TWD? So can we proceed with the lecture? Okay. So let's start with the lecture then. So we are done in the case of animal tissue. We are going to, I have told you that we are going to do 4 kind of tissues in animal tissue. One is epithelium, the other is connective, the third one is muscular and nervous tissue. So we are done with epithelium tissue in the last lecture, and today we are going to start with connective tissue. I have already sent the PDFs on the groups. If you haven't received it yet, please ask your center coordinator, they will provide you. Okay, so today we are going to start with connective tissue. ये वाला PDF भी मिल जाएगा आपको by tonight or tomorrow evening. Okay, so connective tissue, the next type of animal tissue is known as connective tissue. As you can see on the screen, but the connective tissue, it is of different type. It is of different type. The very first one is the loose or areolar tissue. Great, Vanya, very good. I'm happy that maximum of you are getting in marks in 40s, which is really good. So yes, the very first type of connective tissue is loose or the areolar tissue. The second type of tissue is adipose tissue. Second type of connective tissue is adipose tissue. The third type is dense regular tissue. It's clear now? I've changed the settings. अभी तो clear होगा, right? Okay, hold on. Yes, is it okay now? Clear. Okay. Okay, bacha. So there are different type of connective tissue. The very first one is loose or areolar connective tissue. The second one is adipose connective tissue. Third one is dense regular connective tissue, in which you need to, Abhinav, the other students are not having any problem. If you are having any problem, please check your connection and try connecting again. Okay. So dense regular connective tissue is further divided, or it has two type of tissue mainly known as tendon and ligament. So both this tissue comes under the category of dense regular connective tissue. Okay. The fourth one is skeletal connective tissue, in which we are going to discuss about two types of tissue, cartilage and bone. Both of them comes under skeletal connective tissue. And the last one or the fifth one is fluid connective tissue, in which we are going to discuss about two type of tissues, blood and lymph. So yes, your blood is also a tissue. It is a type of tissue only, and it is a fluid connective tissue. Even bone is also a tissue, but it is a hard tissue, which comes under the category of skeletal connective tissue. Okay.
So connective tissue में 5 types: loose or areolar, adipose, dense regular, skeletal and fluid. Clear है classification everyone? बच्चा, we are going to discuss everything. What is lymph? Why blood is placed under fluid connective tissue? Blood में क्या क्या होता है? Bone, cartilage, सब discuss करेंगे. Just wait. Okay, lymph भी discuss करेंगे. Don't worry, you will get to know what is lymph. Wait till then. So let us start with the very first category of connective tissue, that is loose connective tissue or the areolar connective tissue. The loose connective tissue or areolar connective tissue. So बच्चा, connective tissue के case में whenever or wherever you are going to discuss about connective tissue, please remember 3 components of connective tissue. ठीक है, पहले 3 components देखो कौन कौन से होते हैं, वो हर connective tissue में present होंगे. अब वो 3 चीजें कौन सी होती हैं in basic? I'm just giving you a basic idea. Let's say this is a cell, मतलब this is a tissue जिसमें connective tissue है. Okay, अब इस connective tissue में 3 parts present होंगे. One is कुछ अलग अलग तरह के cells present होंगे, कुछ cells present होंगे, then कुछ fibers present होंगे, कुछ fibers like structure present होंगे. Okay, and the third one is matrix और gel like. जो ये space छूट गया है, जो space रह गया है, the space that is empty, it is actually not empty. यहाँ पे एक liquid या फिर gel like consistency filled है, it is known as matrix. So matrix हो गए, cell हो गया and fibers हो गए. ओके, तो ये 3 चीजें कनेक्टिव टिश्यू में होंगे. जस्ट मेक द डायग्राम, एक रफ सा डायग्राम बना लो. मेक अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, उसमें कुछ सेल्स शो करो एंड फाइबर्स शो करो. सेल्स ऑफ कोर्स सेल्स हैं, फाइबर्स फाइबर्स हैं, और जो एम्प्टी स्पेस रह गया इट इज नोन एज मैट्रिक्स. सो ये बेसिक चीज है. कहीं पे भी कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर होगा तो ये 3 चीजें प्रेजेंट होंगी. कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होंगे एंड कुछ जो बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलरली क्या प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स. एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल्स के बाहर जितना भी पार्ट रह गया, इट इज नोन एज मैट्रिक्स. इज इट क्लियर दिस 3 पार्ट्स, दिस डायग्राम? इट इज क्लियर एवरीवन? तो ये बेसिक है अबाउट कनेक्टिव टिश्यू. ओके, now let us start with the very first connective tissue, that is loose connective tissue or the areolar connective tissue. Ab, as I've told you, just hold on. As I've told you that loose any kind of connective tissue is going to have 3 components in it. Okay, so as you can see in the image, बच्चा इस image में देखो, there are these cells present. If I mark it with the pen, see cells present है. कौन कौन से type के cells present है, that you need not to remember, that is not in your syllabus, but there are some cells that are present. Okay, and there are some fibers also present. See, these are fibers. Okay, second component हो गया अपना. And जो part रह गया है empty, that is known as matrix. It is actually not empty,
यहाँ पे फ्लूइड कंसिस्टेंसी का और जेल कंसिस्टेंसी का, प्रोटीनेशियस, जैसे साइटोप्लाज्म क्या है, जेल कंसिस्टेंसी का फ्लूइड है ना, just like that matrix is present. Okay, so in this matrix two things are present, one is some cells and others are some fibers. तो कनेक्टिव टिश्यू का अपना काम हो गया, तीन कंपोनेंट्स जो मैंने बोले थे, दे आर प्रेजेंट. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट loose or areolar connective tissue. What is happening here? So these are cells and fibers. As I have told you, cells अलग अलग टाइप के हैं, प्लस फाइबर्स बच्चा दो तरह के होते हैं हमारी बॉडी में, व्हाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स. व्हाइट फाइबर्स जो होते हैं वो नॉन इलास्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकते, एंड येलो इलास्टिक होते हैं, तो वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जहां पे भी प्रेजेंट होंगे इजीली स्ट्रेच हो सकता है वो पार्ट. ओके, सो दो तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होंगे. सो सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, and these fibers, they are loosely arranged, as you can see in the image, they're just lying there loosely. So these fibers, they are loosely arranged in a semi-fluid ground substance known as matrix. So this I have already explained. Yes, Shaunik, we have just started. Before this, I have just discussed about the classification of connective tissue. You will get it in the notes. Okay. So loose connective tissue, it is going to have cells. Yes, I will share the PDF, don't worry. So loose connective tissue, it is going to have cells, fibers, plus some matrix. Now, the fibers, they are loosely arranged within the matrix. That is why it is known as loose or areolar connective tissue. अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? दिस पर्टिकुलर टिश्यू बच्चा, ये बॉडी में ना मैक्सिमम जगह पे प्रेजेंट होता है, जहां पे भी खाली स्पेस दिखेगा ना घुस जाएगा. ओके. हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में भी बच्चा मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, वहां पे थोड़ा सा मैट्रिक्स का जो फॉर्मेशन है दैट इज डिफरेंट, मींस मैट्रिक्स का कंपोजिशन इज डिफरेंट. वहां पर डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर डिफरेंट प्रेजेंट होगा, बट वहां पे भी एम्प्टी स्पेस वाज मैट्रिक्स, यहाँ पे भी एम्प्टी स्पेस इज मैट्रिक्स. ओके, सो अब इस टिश्यू का फंक्शन क्या है? दिस इज प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल. तो हमारा स्किन है सबसे ऊपर हमारी बॉडी पे, और स्किन के नीचे क्या प्रेजेंट है? मसल्स प्रेजेंट है, राइट? हैंड में, लेग्स में, बॉडी में, पूरे बॉडी में स्किन है, स्किन के नीचे मसल्स है. तो स्किन और मसल्स के बीच में जो स्पेस रहता है, दैट स्पेस इज फिल्ड बाय दिस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. फर्स्ट लोकेशन हो गया. सेकेंड, इट इज प्रेजेंट इन द बोन मैरो. इट इज प्रेजेंट इन द बोन मैरो. बोन मैरो क्या होता है बच्चा? बोन मैरो इज प्रेजेंट जनरली इन लॉन्ग बोन्स. सब बोन्स में नहीं होता बोन मैरो. इट इज प्रेजेंट जनरली इन लॉन्ग बोन्स विद इन आवर बॉडी. लॉन्ग बोन्स कौन सी हो गई? द बोन दैट इज प्रेजेंट इन आवर हैंड, द बोन दैट इज प्रेजेंट इन आवर थाई रीजन. फीमर बोन होती है थाई में. स्केलेटल सिस्टम जब पढ़ेंगे तो सब बोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कौन कौन सा बोन्स कहाँ पे होता है. बट जनरली जहाँ पे हमारी लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट है ना, जैसे रिब्स, रिब केज ऑल्सो हैज लॉन्ग बोन्स. तो जहां जहां लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होता है वहां बोन मैरो प्रेजेंट होता है. एंड यस, द फंक्शन ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो का फंक्शन होता है बच्चा टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स. टू प्रोड्यूस ब्लड सेल मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब ब्लड में प्रेजेंट होता है. तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन का होता है बोन मैरो में. सो दिस बोन मैरो आल्सो हैज दिस loose or areolar connective tissue. Okay, and also this tissue is going to present around the blood vessels and the nerves. Nerves are nervous tissue में जो present होती हैं. Nerves के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे when I'm going to discuss about nervous tissue. Okay, and blood vessels के around भी areolar connective tissue present होता है. So तीन लोकेशन जो आपको याद रखनी है. It is present in between skin and muscle. It is present in bone marrow, and it is present around the blood vessels and nerves.
Okay. Now the function क्या बच्चा? It fills the space between the different organs. अब देखो, मेरे स्टमक और लिवर के बीच में लेट्स से कुछ स्पेस है, वेकेंट स्पेस है, एम्प्टी, तो वहां पर ये एरियोलर टिश्यू उस स्पेस को फिल कर देगा. मतलब इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जहां पे भी स्पेस खाली होगा ना, वहां पर प्रेजेंट होगा. यस बच्चा, जहां पे भी एम्प्टी स्पेस होगा ना, वहां एम्प्टी स्पेस नहीं रहने देगा. स्किन और मसल्स के बीच में भी स्पेस था, तो वहां पे भी फिल कर दिया. ओके. So yes, in a way you can say it connects the skin to the underlying muscles. And as it is filling the space between the different organs, it is also going to provide support to the internal organs. As well as वहां पर healing process भी करता है. क्यों healing process करता है? क्योंकि इसके पास एक particular kind of cell होता है जो नया cell form करने में help करता है. अभी हमने पढ़ा ना, different types of cells present होते हैं इसमें. So it has some particular cells that helps in the formation of new cell. So it also going to help in the repairment of the tissue. So basically, in general form, if I talk about loose or the areolar connective tissue, it has different kind of cells. It has different fibers known as white and yellow fibers. White fibers non-elastic होते हैं, yellow fibers elastic होते हैं. And these fibers, they are loosely arranged in the matrix. That is why the name loose connective tissue. Now this tissue is present. बच्चा मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, just listen. Now this tissue is present between the skin and the muscle. This tissue is present in the bone marrow. Bone marrow is present in our long bone, and it does the function of blood cell production. It is also going to present around the blood vessels and the nerves. तो ये location हो गया उसका. Now function क्या है? It fills the space between the different organs and connects the skin to the underlying muscle. It is also going to provide support to the internal organs, as well as it has some particular kind of cell that help in the repairment of the tissue. नो बच्चा, बैक्टीरिया ऐसे नहीं प्रेजेंट होता है. बैक्टीरिया किसी ऑर्गन में प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर नहीं, एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होता है. ओके बच्चा, there are two type of fibers that are present in our body, Anushka. The yellow fiber and the white fiber. White fiber जहाँ प्रेजेंट होगा वो बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, बट स्ट्रेंथन करेगा उस टिश्यू को. एंड येलो इलास्टिक फाइबर जहां प्रेजेंट होगा वो स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करेगा, बट साथ साथ इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करेगा, so that that particular organ can stretch also. Okay, so this was about loose areolar connective tissue. Oh, I've placed an image for it. Let me find it out. Wait, please. See, this is the image for areolar connective tissue or the loose connective tissue. As I've told you, bacha, it is present in between the skin and muscle. So skin ऊपर है and muscles नीचे हैं, and it is present in between the skin and muscle. समझ में आया? This is the loose connective tissue. Is it clear? See, ये इसका मैट्रिक्स पार्ट है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी. अगर इसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो you will be able to see many types of cells and fibers in it. So this is loose connective tissue. Bacha, those who got disconnected, please ask me at the end of the lecture.
But the function of macrophage, it is not related to your syllabus. It is not in your syllabus. However, if you want to discuss it, we can discuss it at the end of the lecture when I will be taking all the doubts. Okay. So this was loose. This was about loose connective tissue or the areolar connective tissue. It is going to have a matrix in which cells are suspended as well as some fibers that are loosely arranged. They will be present between the skin and the muscle, in the bone marrow, and around the blood vessels and nerves. Main function is to fill the space between the internal organs and to provide support to the internal organs. So this was about loose or the areolar connective tissue. Okay, so as according to this classification, the first one is done, loose or areolar connective tissue. Now let us proceed with the second type, that is adipose connective tissue. Adipose, bacha. Yes, Aditya, that was real. That image was real, bacha. Now, adipose connective tissue, bacha. Adipose connective tissue is actually, in general terms, if I speak, fat cells. It is fat tissue. Adipose connective tissue is fat tissue. So, जहां भी हमारी body में fat present है, it is adipose connective tissue. Adipose generally is fat cells. It is having oil droplets in it. Okay, so adipose is fat, having oil, having lipid thing. So this adipose connective tissue, it is made up of specialized large spherical cells known as fat cells or adipocyte. The cells that are present in adipose connective tissue are known as adipocyte. Adipocytes are adipose connective tissue cells, which are also known as fat cells. Abhinav, bacha, let me come to that particular point. Then only after discussion of that particular point, you can ask me the doubt. Please don't ask ऐसे ही पहले से, okay? Just wait for me to discuss it. Okay, so adipose means something that is having lipid content in it. Fat cells that has fat cells in it. And it is made up of specialized large spherical cells known as fat cells or the adipocytes. Adipocytes are also known as fat cells. The fat cells, they are known as adipocytes. The fat, adipo means fat. Now, ये कहाँ present होगा? Location will be beneath the skin. Skin के नीचे आपका fat present होता है. The fat, it get deposited under the skin within our body. It is also present in the bone marrow. Bone marrow के अंदर adipose tissue भी present होता है. Fat cells भी present होते हैं. Also, it is present around the kidney and the liver. मतलब internal organs जो होते हैं like kidney and liver, इसके around एक fat की layer present होती है. So क्या होता है, let's say एक accident हुआ या कुछ भी आपको एकदम से shock लगा, तो these organs they are going to have this layer of fat around them, and this layer of fat is going to absorb the shock that is caused during the accident. Okay. So made up of specialized large fat cells or adipocytes, and this adipose connective tissue is present beneath the skin, in the bone marrow, or around some internal organs like kidney, liver, etc. Now the function. The function is that they act as, the most important function, that they act as food reserves for storage and metabolism of lipid. For storage, फैट को स्टोर करके रखते हैं एंड उसका मेटाबॉलिज्म करते हैं. मेटाबॉलिज्म मींस फैट से कुछ और फॉर्म करना, फैट को अलग अलग जगह पे यूज करना. मेटाबॉलिज्म इज बच्चा द केमिकल रिएक्शन दैट आर अकरिंग इन आवर बॉडी.
तो अगर किसी भी केमिकल का, फैट क्या है, केमिकल, ये लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब क्या है बच्चा, दीज आर केमिकल्स ओनली ना। तो ये केमिकल से कुछ फॉर्म होता है या फिर इनका ब्रेक डाउन होता है। तो जहां पे भी ब्रेक डाउन हो रहा है या कुछ फॉर्म हो रहा है, इट इज थ्रू मेटाबॉलिज्म. Metabolism is actually the sum total of chemical reaction. Okay. So metabolism of lipids mean fat. The lipids, it means fat. Okay. So adipose connective tissue में जो adipocytes present हैं, जो fat cells present हैं, they are going to act as food reserve. How? They are going to store this lipid or the fat, and they will further do the metabolism of this fat. मीन्स या तो उसको ब्रेक डाउन करेंगे या फैट को यूज करके कोई और नया कंपाउंड बनाएंगे बॉडी में. ओके, whatever the body required, that will depend on the location of that particular cell as well as the function, कहाँ पे क्या requirement है. Okay, so they are going to act as food reserve for the storage and metabolism of lipid. Beside this, they are also going to act as heat insulator, pressure pull and push absorber. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Pressure pull and push absorber, when they are going to act as a protective layer in the case of internal organ. Okay, kidney, liver, इसके अराउंड ये लेयर है. तो एक्सीडेंट के टाइम पे या किसी भी टाइम पे जब हमारी बॉडी को कोई हार्म होता है, at that particular time, this tissue, it is going to absorb all the pressure and the pull and push force. So it is going to act as a shock absorber by protecting our internal organs. Now, how they can act as heat insulator? But if the impact of the force will be huge, of course, damage होगा body को. But थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन जरूर प्रोवाइड करेंगे सो दैट बहुत ज्यादा डैमेज इंटरनल ऑर्गन्स को ना हो. बट ऑफ कोर्स अगर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, बहुत फोर्सफुल हुआ है एक्सीडेंट, तो ऑफ कोर्स इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होंगे. बट इन सम वे, टू सम लिमिट, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन. ओके, नाउ दे एक्ट एज insulator in the case of blubber of whale, hump of camel. ब्लबर ऑफ व्हेल क्या होता है बच्चा? इट इज प्रेजेंट, व्हेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फैट का लेयर प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट लेयर. Yes, hump of camel also contains fat where it stores the food in it. Okay, so blubber of whale means fat layers in the whale. वहां पे बहुत सारी फैट लेयर्स होती हैं, तो उसको एक नाम दिया है blubber of whale. The fat layers, they are present in different layers in the case of whale, known as blubber of whale. And hump of camel is also going to have this fat tissue in which it stores the fat in it. कहते हैं ना कैमल बहुत दिन तक खाना और पानी के बिना रह सकता है, बिकॉज वो क्या करता है, खाना खाता है, उसको पार्शियली ग्राइंड करता है, डाइजेस्ट करता है, और वो पार्ट उसका फैट टिश्यू में जाके स्टोर हो जाता है. That is hump of camel. Okay, now how they act? बच्चा whale के अंदर there is different layers of fat known as blubber. The fat tissue that is present inside the whale, it has many layers of fat that is known as blubber. Okay, now how it is going to act as heat insulator. हीट को कैसे रिजर्व करके रख सकता है हमारी बॉडी में? सी, हमारी बॉडी में बच्चा स्किन लेयर प्रेजेंट है. लेट अस से दिस इज द स्किन लेयर, एंड स्किन लेयर के नीचे मसल्स प्रेजेंट है, एंड आल्सो द ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, राइट? ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है स्किन के नीचे. सो दिस ब्लड कैपिलरीज हैव ब्लड रनिंग थ्रू इट. अब इस ब्लड कैपिलरी में अगर ब्लड रन हो रहा है बच्चा, तो ब्लड के अंदर ही हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन होता है ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में. ओके, सो अगर लेट्स से बहुत थिक लेयर प्रेजेंट है यहाँ पर फैट की,
तो the heat will not be able to escape from the body. Easily escape नहीं कर पाएगा, right? But अगर single layer of fat cell present है, मतलब बहुत कम fat cell present है, तो easily the heat can be escaped out from the body. So that is why they act as a heat insulator. During winter times ये heat को अंदर store करके रखते हैं. This fat layer, it won't allow this heat to escape our body easily, and that is how our body remains at a particular constant temperature. Okay, constant temperature पे this fat layer, it helps the body to remain at a constant temperature. तो बहुत ज्यादा thick layer भी नहीं होना चाहिए फैट का और बहुत ज्यादा thin भी नहीं होना चाहिए. Moderate is fine. Okay, इसलिए कहते हैं बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए. मसल्स का लेयर ज्यादा होना चाहिए, फैट का नहीं. ओके, यस बच्चा, डायग्राम यू कैन मेक लाइक दिस. सिंपल एक डायग्राम बनाओ. नाउ फैट सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं. फैट सेल्स कैसे हैं बच्चा? इफ यू कैन सी इन द डायग्राम, दीज आर लार्ज स्फेरिकल सेल, ऐसे. ओके, एंड स्फेरिकल सेल के बीच में बच्चा, इन द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सेल, बड़ा सा ऑयल ग्लोब्यूल प्रेजेंट होता है, ऑयल ड्रॉपलेट प्रेजेंट होता है, जहां पे एक्चुअली फैट स्टोर हो रहा है. ऑयल इज व्हाट? इट इज फैट ना. So this is oil globule in the center, and because this oil globule, a very big droplet of oil globule is present in the center of this cell, the nucleus for this cell, it gets shifted towards the periphery. Yes, I will send in the notes, don't worry, PDF मिल जाएगा. So the nucleus, it is present towards the periphery, not in the center of the cell. बच्चा डायग्राम जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बनाओ. सिर्फ एक फैट सेल का डायग्राम. दिस इज बच्चा पेरिफेरी, मतलब साइड में. सेंटर में नहीं प्रेजेंट है, साइड में आ गया. बिकॉज सेंटर में तो क्या ले लिया, जैसे प्लांट सेल में हमने पढ़ा था ना, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होता है, साइड में आ जाता है. जस्ट लाइक दिस, द न्यूक्लियस, जस्ट लाइक दैट, द न्यूक्लियस हियर इज आल्सो हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द साइड ऑफ द सेल, towards the periphery of the cell, because in the center Manthan, I will take all the doubts at the end of the lecture. Can you please wait till then? अभी जो बता रही हूँ प्लीज वो सुनो, focus in on that, otherwise you won't be able to connect. Okay, so फैट सेल कैसा है? लार्ज स्फेरिकल सेल है, सेंटर में ऑयल ग्लोब्यूल प्रेजेंट है, फैट ग्लोब्यूल. दिस इज द फैट ग्लोब्यूल जो प्रेजेंट है सेंटर में. सेल प्रेजेंट है, सेल के बाहर न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट है, सी साइड में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, एंड साइटोप्लाज्म भी इधर रीजन में होगा, साइड में. तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. ऑफ कोर्स कनेक्टिव टिश्यू में आई हैव टोल्ड यू फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. सो फाइबर्स प्रेजेंट है, सेल के बाहर प्रेजेंट होंगे बट ये. ओके, तो व्हाइट फाइबर्स भी हैं, येलो फाइबर्स भी हैं. No, बच्चा, nucleus cannot be inside the oil part. It will be suspended only in the cytoplasm. बच्चा, fat globule is one that where the fat is actually getting stored. फैट स्टोर करके रख रहा है ना, तो साइटोप्लाज्म में फैट स्टोर हो रहा है. और वो फैट किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? दिस ऑयल, इन द फॉर्म ऑफ दिस ऑयल ड्रॉपलेट. ओके अनुष्का, इट्स ओके यशस्वी, बस आपको समझ में आना चाहिए. सो देखो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में भी जो बाहर प्रेजेंट है, दिस रीजन जो बाहर प्रेजेंट है बच्चा, आउटर साइड ऑफ द सेल्स में जो प्रेजेंट है, इट विल बी मैट्रिक्स. मैट्रिक्स हैज दिस सेल्स नोन एज एडिपोसाइट और द फैट सेल,
and some fibers, white fiber, yellow fiber. So connective tissue में matrix हो गया, cells हो गया, fibers हो गया, जो 3 basic components होने थे. Okay. Now in particular if you talk about fat cell और adipocyte, इसके पास एक cell membrane होगा, अंदर cytoplasm है of course, cytoplasm के बीच में oil globule present है, that is fat globule. Okay, which is basically the site of storage of fat, and nucleus is present towards the site because बीच में पूरा space किसने ले लिया? The space is occupied by the fat globule. Yes, Parush, you will get it. But the globule and drop is one and same thing. Globule is large spherical like structure. So fat droplet, fat globule, one and same thing. Don't get confused. And lipid and fat is same thing. So lipid globule aa jaye, lipid droplet aa jaye, again same. Okay. See this diagram. This is a real image for the fat tissue, bacha. The real image for the fat tissue. So as you can see, cell present hai. This is the particular cell. This one is the particular cell. And देखो कितना बड़ा जो white region है ना, this white region is all lipid droplet or the fat globule. तो पूरा cytoplasm का पूरा part actually इसी ने ले लिया है. Okay, and because of this large lipid droplet, the cytoplasm it is present बिल्कुल side में towards the periphery. This cytoplasm, and that cytoplasm will have nucleus. So see nucleus कितना side में आ गया है. Okay. बच्चा ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे बट ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में साइड में माइन्यूट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे. एज कंपेयर टू दोस ऑर्गेनल्स, दिस लिपिड ड्रॉपलेट इज वेरी large. So that is why most of the space is occupied by this lipid droplet only. बच्चा lipid droplet is actually fat ना. फैट टिश्यू का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फैट. तो फैट किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? इस लिपिड ड्रॉपलेट के फैट फॉर्म में. भाई एम्प्टी सेल था जब फैट टिश्यू बना और फैट सेल्स बने, वो एम्प्टी था, उसमें साइटोप्लाज्म था एंड न्यूक्लियस था. बट धीरे धीरे इसका काम था स्टोरेज ऑफ फैट, तो उसने क्या करा? फैट को स्टोर करना शुरू किया सेंटर में. तो जब फैट स्टोर करना शुरू किया तो वो ऑयल ड्रॉपलेट बड़ा होता गया एंड बिकॉज ऑफ दिस द साइटोप्लाज्म क्या हुआ? वो पेरिफेरी पे आ गया एंड न्यूक्लियस भी पेरिफेरी पे आ गया. क्लियर है अभी? Yes, nucleus is towards one side because most of the space has already been taken by this oil droplet. So this, हाँ बच्चा, जब धीरे धीरे फैट स्टोर होना शुरू होगा तो ड्रॉपलेट स्मॉल होगा एंड अल्टीमेटली इट विल गेट बिगर एंड बिगर. और जब वो स्टोरेज का काम पूरा तरह से करने लगेगा तो इट बिकम्स वेरी लार्ज, बिकॉज दैट इज द मेन पर्पस ऑफ फैट टिश्यू ना. फैट टिश्यू हमारी बॉडी में प्रेजेंट है फैट को स्टोर करने के लिए. सो मेनली जो साइट है वो दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय द लिपिड ड्रॉपलेट. बच्चा वो पिंक डॉट जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स प्रेजेंट है. अलग अलग टाइप के सेल्स और भी प्रेजेंट होंगे ना मैट्रिक्स में. आई हैव टोल्ड यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. दैट कैन बी दैट, यू कैन इग्नोर दैट इज नॉट अंडर योर सिलेबस. Just try to focus whatever I'm telling you, okay? So this was about the second type of connective tissue, that is adipose connective tissue. Now the third type of connective tissue is dense regular connective tissue. The third type of connective tissue is dense regular connective tissue.
अब देखो बच्चा, लूज कनेक्टिव टिश्यू में द फाइबर्स दे वर अरेंज लूजली एज आई हैव टोल्ड यू, राइट। यहाँ पर देखो फाइबर्स दे वर अरेंज लूजली, दैट इज व्हाई द नेम लूज कनेक्टिव टिश्यू. But here in the case of dense regular connective tissue, bacha, the fibers, they are compactly packed. They are compactly packed as I've written here. The fibers and the cells, they are compactly packed. That is why the dense connective tissue. And the orientation of the fibers will show a regular pattern. Means ऐसे ही loosely कहीं पे भी नहीं पड़े. They are forming a particular pattern. They are arranged in pattern. That is why dense regular connective tissue. Dense because the cells and the fibers, they are compactly arranged. And regular connective tissue, why? Because these fibers, they are arranged in a regular pattern within the matrix region. That is why the dense regular connective tissue. Clear है now? Dense क्योंकि compactly arranged है, regular because they are making a regular pattern. Now the matrix here will be solid बच्चा. अभी तक हम लोगों ने जो matrix देखा था वो कैसा था? Liquid और fluid like consistency थी, means gel like consistency थी, semi solid था. पूरी तरह से solid भी नहीं था, पूरी तरह से fluid भी नहीं था, it was semi solid. But here in the case of dense regular connective tissue, the matrix is solid because of protein that are present in it, and the proteins that are present in it is collagen protein and the elastin protein. These are two type of proteins. What are collagen and elastin? These are two types of protein that are found within our body. So dense regular connective tissue में बच्चा, इसके मैट्रिक्स में दो पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन मिलते हैं, नोन एज कोलेजन प्रोटीन एंड द इलास्टिन प्रोटीन. Collagen protein is going to provide the strength to the tissue. Elastin protein is going to provide the elasticity to the tissue. Okay, so matrix is solid, going to have proteins in it. कौन से? Collagen and elastin. Collagen क्या करेगा? Strength provide करेगा, and elastin is going to provide elasticity. Now, as I've shown you in the very first slide where we were studying about the classification of connective tissue, I've told you this dense regular connective tissue is further classified into two types known as tendon and ligament. Known as tendon and ligament. So, bacha, tendon is that dense connective tissue that connects skeletal muscle to the bone. So, no, bacha, muscle is skeletal muscle means muscles, yes. Skeletal muscles are those muscles that are connected with our skeletal system, bone से जो connected है. Like heart में जो muscles हैं, वो तो किसी bone से connected नहीं है ना. So these are अलग cardiac muscles. But those muscles that are connected with the skeletal system or the bones in our body are known as skeletal muscles. So उन muscles में और bones के बीच में जो connection होता है, it is known as tendon. It is known as tendon, and it is a type of dense connective tissue. बच्चे skeletal muscles वहां present होंगे जहां bones present है. Bones के ऊपर muscles present है ना हमारी body में. So skeletal muscles are those muscles that are connected with the skeletal system. Bacha, collagen is a protein that makes a fiber known as collagen fiber. So don't get confused. Okay. The white fiber I had talked about, the white fiber is actually this collagen fiber. So collagen is actually the name of a protein that is going to make a fiber known as collagen fiber. Okay.
So tendon is the dense connective tissue that is going to join the muscles to the bone. कौन से मसल्स को? स्केलेटल मसल्स को. स्केलेटल मसल्स कौन से मसल्स है? These are those muscles that are connected with the bones. Elastin is also a protein. जब बता रही होती हूँ तब सिर्फ लिख रहे होते हो, फोकस नहीं करते हो. That is why खो जाते हो. I have already told you बच्चा, collagen and elastin both are protein. Not able to see the screen. अभी yes, elastin is made up of yellow fibers. मतलब elastin is a protein that is going to make yellow fibers, because yellow fibers कौन से थे? Elasticity जो provide कर रहे थे, right? So collagen is the one, white fiber बनाएंगे जो, collagen protein white fibers, elastin protein yellow fibers. Tendon, it connects skeletal muscle to bone, and the one tissue that connects bone to bone, जो दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है. दो बोन्स के बीच में भी बच्चा ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होना चाहिए, बिकॉज बोन्स क्या करती है? मूवमेंट शो करवाती है, राइट? तो अगर बोन्स के बीच में मूवमेंट हो रही है एंड उन दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन हो जाएगा, तो बोन टिश्यू को हार्म हो सकता है. So to prevent friction in between two bones, the ligament is present there. So ligaments connects bone to bone. So please remember, याद कैसे रखोगे? Just try to remember TMB and LBB. TMB means tendon, muscles, bone. Muscles और bones के बीच में tendon, TMB. LBB means ligament, bone to bone. तो bone to bone के बीच में connection ligament, muscles and bones के बीच में connection tendon. Clear? TMB is for tendon that connects muscle to bone, क्योंकि sometimes it happens. बच्चा yes, example आपको अभी दिखा देती हूँ. लो, see, bones के साथ muscles जो attach है, it is known as skeletal muscle. This is our bone. And इसके बीच में जो ये white आपको दिख रहा है, this is tendon. So muscles and bones को जो connect कर रहा है, it is tendon. Ligaments देखो bones को connect कर रहा है. जहां पे भी joints present होंगे वहां पर ligament present होता है, that connects bone to bone. So it is present in our finger joint, it is present in our thumb joint, it is present in our in between our जहाँ पे knee bone present होती है, okay, जहाँ हमारी elbow present, मतलब जहाँ पे भी joint present है और वहां पे friction का chances बहुत ज्यादा है, there the ligament is present to connect bone to bone. Okay, Abhinav, I will take all the doubts at the end of the lecture. So dense regular connective tissue, the fibers and cells, they are compactly arranged within the matrix region. That is why it is known as dense connective tissue. And they are arranged, the fibers and the cells, they are arranged in a particular manner, in a particular regular pattern. That is why it is known as regular tissue. So dense regular connective tissue. Matrix is made up of two proteins. It is having two proteins. कौन से? Collagen and elastin. Collagen is the protein that makes the white fiber. Elastin is the one that makes the yellow fibers. The dense connective tissue are of two types, mainly tendon and ligament. The tendon, it connects the skeletal muscles, the muscle to the bone. So in between muscles and bone, they're going to be tendon. And ligaments connects bone to bone. बच्चा मोस्टली जहाँ पे बोन टू बोन का कनेक्शन होगा वहां लिगामेंट प्रेजेंट होगा, बट नॉट ऑल जॉइंट्स आर गोइंग टू हैव लिगामेंट्स. There are some other kind of structures also present, means cartilage, auricular cartilage होती है, वो भी present हो सकता है.
So you need to remember the tendon is present, there is going to connect the muscle to the bone, and the ligament is going to connect bone to bone. Done with this part, everyone? Can I move forward to the next slide? So, bacha, next type of connective tissue is skeletal connective tissue. अभी तक देखो first slide पे, let me take you to the first slide. We had already discussed the loose or areolar connective tissue, the adipose connective tissue, and the dense regular connective tissue, which is tendon and ligament. Now we are proceeding towards the next type. Now we are proceeding towards the next type, that is skeletal connective tissue. Okay. So skeletal connective tissue के अंदर हमें दो टिश्यूज पढ़ने हैं. वन इज कार्टिलेज एंड द अदर इज बोन. So let us first start with the cartilage. Cartilage cells, जैसे बच्चा fat cells were adipocytes. The song, बच्चा, I am not hearing any song. And everyone is on mute except me, and there is no sound. So yes, cartilage cells. The cartilage cells are known as chondrocytes. The cartilage cells are known as chondrocytes, just like fat cells were known as adipocytes. The fat cells were known as adipocytes, just like that the cartilage cells are known as chondrocytes. And these chondrocytes are present in small cavities. Cavities are empty structure. Okay, empty space like structure. So these cavities or hole like structure, you can say, they are enclosed in some small cavities known as lacunae. Known as lacunae within the matrix. As you can see in the image, bacha, the light pink color, it is matrix, and it has the dark pink color, जो dark purplish shade है, it is lacunae, empty space है, cavities, and इस cavities में the chondrocytes are present. So there can be single chondrocyte within a lacunae, or it can have more than one cell, more than one cartilage cell, or the chondrocyte. So it is not like एक lacunae में एक ही cartilage cell होगा. It can have more than one type, more than one chondrocytes. Okay. Now here also the matrix will be solid, but it will be firm and flexible. The matrix will be somewhat solid, and it is actually going to provide flexibility. Now the location for this particular type of tissue, the cartilage tissue, it is found in the tip of the nose. If you just touch the tip of the nose, you can feel the flexibility in it. Just try to touch the tip of the nose. You will feel the flexibility. It is also present in the outer ear. Yes, ear में the pinna region जो होता है ना, it is made up of cartilage. It is also going to present between the adjacent bones of the vertebral column, बच्चा. Vertebral column is, बच्चा, I have told you white collagen fibers somewhat elasticity provide करते हैं. Not as much as elastic as compared to the yellow elastic fibers, but somewhere they are going to provide some elastic or stretchiness. Sorry. Okay. So the white fibers that are present, and the solid matrix that is present, वो उसको firm तो बनाएगा, मतलब strengthen तो करेगा, but flexibility भी provide करेगा. Okay.
बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाएगा कि प्रेशर एक्सर्ट बहुत ज्यादा कर पाए, बट यस फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा. नाउ the vertebral column, yes, it is the backbone. The vertebral column is backbone. So backbone, it is made up of small bones, many small bones known as vertebra, known as vertebra. So जितने भी vertebra हैं बच्चा, उन सब के बीच में this cartilage tissue it is present. Why? Because बैकबोन में भी देखो हम लोग मूव करते हैं, बेंड करते हैं या फिर ऊपर उठते हैं, we move our backbone, तो वहां पे भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकता है. तो फ्रिक्शन को कंट्रोल करने के लिए दिस कार्टिलेज इज प्रेजेंट देयर. एंड द ट्रैकियल रिंग्स. ट्रैकियल रिंग्स क्या होती हैं? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ट्रैकियल रिंग्स? See this diagram. Can you identify? Yes, bronchioles के अराउंड, विंड पाइप के अराउंड, ट्रैकिया के अराउंड जो होता है, ट्रैकिया इज द विंड पाइप. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, इन ट्रैकिया. वेरी गुड बच्चा. So as you can see in the image बच्चा, the trachea it has also some ring like structure. See this trachea, it have just hold on. Yeah, so this trachea, it has ring like structures around it. These ring like structure are made up of cartilage. They are made up of cartilage, and this cartilage, what does they do here? It prevent the trachea from being collapsed. Otherwise this trachea, it can collapse. The windpipe, it can collapse. तो ये collapse ना हो और हमारे neck region में erect stand करे. That is why these tracheal rings are present. And these tracheal rings, they are made up of cartilage. Also, they are present in between two bones, as you can see. They are present in between two bones, so as to control the friction. So as to prevent the friction that can occur in between two bones when there is some kind of movement. Also, it is present in the pinna region, as you can see in the ear. So ear में भी जो हमारा pinna region है, it has this cartilage that is present, that provide flexibility. अभिनव, वो सब ईयर का स्ट्रक्चर है बच्चा, इंटरनल स्ट्रक्चर ईयर में प्रेजेंट होता है, वो सब है, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ. हम लोग ईयर का स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट डिस्कसिंग वेयर द कार्टिलेज आर प्रेजेंट. ओके, last slide. Yes, so this cartilage, it is present in the tip of the nose, outer ear, between adjacent bones of the vertebral column, tracheal rings, etc. The function is to provide support as well as the flexibility, prevent frictional wear and tear in the tissue, and they are also going to serve as a cushion in between vertebral column. Of course, in between every vertebra, they are serving the function of a cushion. Cushion क्या करेगा? अगर cushion present होगा दो frictional forces के बीच में, तो वहां friction produce नहीं होगा. So bones के बीच में cushion रख दिया. It is present like this in the vertebral column. So this is the basic about cartilage. The matrix is present, which is solid type, and it provides flexibility. It has cells known as cartilage cells or chondrocytes. बच्चा vertebrae is vertebra only, the vertebral column, backbone. Vertebrates are the organism that have vertebral column. Vertebrae or vertebra is one and same thing. Vertebral column is another word for backbone.
So cartilage is going to provide the flexibility within our body. Okay. Now the next type of connective tissue is spine is different बच्चा. Spine में तो nervous tissue present होगा, है ना? Spine में हमारी nerves present होती हैं. So that is different. Yes, vertebral column के अंदर ही बच्चा spine present. Actually जो spine क्या है? Let me tell you. See, let's say this is vertebral column. Okay, हमारी backbone. अब ये बैकबोन का मेन फंक्शन क्या होता है? इट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू आवर स्पाइन. तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, जहाँ पे नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है, इट इज रनिंग इनसाइड दिस वर्टेब्रल कॉलम. सो लेट्स से दिस ग्रीन पार्ट दैट आई एम ड्राइंग हियर, इट इज स्पाइन. ओके, सो स्पाइन में नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं. And this spinal cord, it runs inside this vertebral column. So this vertebral column or the backbone, it actually provide protection to this spinal cord or the nervous tissue. So spine में nervous tissue होगा. Okay. Now we are going to discuss about the next kind of skeletal connective tissue, that is bone. That is bone. The second type of skeletal connective tissue. So bone, it is a hard connective tissue, very hard. It is a hard connective tissue. इसका मैट्रिक्स पूरी तरह से सॉलिड होगा और एकदम यहाँ पे सॉल्ट का डिपोजिशन हो जाता है. द मैट्रिक्स, इट हैज डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स. कौन से सॉल्ट्स? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स. तो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, मैग्नीशियम डिपॉजिट हो जाता है, एंड दैट इज हाउ इट बिकम्स वेरी हार्ड. And also the fibers that are present here are collagen fibers. Tendon side. लो बच्चा जल्दी से नोट करो. Let me know once you are done. No, Advik has asked me about this slide. So Advik, please let me know when you are done. Done? Okay. So bacha, bone, it is a hard connective tissue, and how it becomes so hard, the matrix. Yes, I will send the PDF. Don't worry. So bones, it has hard connective tissue, and why it becomes so hard, how it becomes so hard? Because the matrix, it becomes rich. It is very rich in calcium and magnesium salts. So the calcium and the magnesium, it gets deposited within the matrix region. And also this matrix have fibers. कौन से fibers? Collagen fibers. That I've told you, white kind of fibers, जो strength बहुत ज़्यादा provide करते हैं. So that is how the matrix, it becomes so hard because of deposition of calcium and magnesium salts in it. And it gives strength. How? The bone cells, they get the strength from these collagen fibers that are present inside it. Now, just like chondrocytes were cartilage cells, the osteocytes are bone cells. Because Abhinav, as I've told you, matrix region में जहाँ पे भी matrix region present होगा, it has different kinds of enzymes that act on different kind of molecules. So यहाँ पे जो bone cells में जो enzymes होती हैं, they can absorb or they can act on calcium and magnesium products. That is why the calcium and magnesium deposit within the matrix region. So these matrix, they have particular kind of enzyme that help in the deposition of calcium and magnesium.
Okay. Also, sometimes phosphorus can get deposited, but mainly calcium and magnesium. Now, just like chondrocytes were cartilage cells, osteocytes are known as bone cells. Osteocytes are bone cells. Osteo means bones, cytes means cell. So, bone cells are osteocytes, and they are just like chondrocytes. They are present in the empty spaces known as lacunae. So chondrocytes were also present in lacunae. Just like that, bone cells are also present in lacunae. Now, एक लाइन नीचे जो लाइन लिखी है, लेट अस रीड दैट, और इसको अच्छे से समझो बच्चा, जो भी नोट कर रहा है प्लीज स्टॉप, जस्ट अंडरस्टैंड दिस डायग्राम फर्स्ट, दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट, उसके बाद आप नोट कर लेना, आई विल गिव यू द टाइम. ओके, पहले समझ लो. So the line, let us read the line first. The matrix form thin plates called lamellae around Haversian canal. In the lamellae, minute bone cells, osteocytes are present, and caniculi are the minute processes of osteocyte. Now let us see इसका मतलब क्या है. Okay, अब देखो इस डायग्राम को पहले देखो. Just look at this, focus on this diagram. Whoever writing, हाँ अभिनव नहीं समझ में आएगा, वही समझा रही हूँ, प्लीज वेट. अभी समझ में आ जाएगा, जस्ट वेट, जस्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम. जो भी लिख रहा है जस्ट स्टॉप. ओके, अब देखो बोन सेल्स प्रेजेंट होंगे नोन एज ऑस्टियोसाइट्स. कहाँ प्रेजेंट है? मैट्रिक्स में. ओके, अब वो बोन सेल्स कैसे प्रेजेंट है? एक पैटर्न में प्रेजेंट है, एक पैटर्न में प्रेजेंट है. वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न समझना है. ओके, सो बोन सेल्स, हमारे बोन्स के अंदर में एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है बोन्स में. व्हाट पैटर्न इज दिस? इट इज नोन एज दिस ऑस्टियन पैटर्न, नोन एज ऑस्टियन. अब इस ऑस्टियन में क्या होता है वो देखते हैं. ओके, सो दिस ऑस्टियन, जो सीमेंट लेयर दिखाया है, इट इज बच्चा मैट्रिक्स ओनली. इट इज जस्ट मैट्रिक्स रीजन आउटसाइड. ओके, अब इसके अंदर center में, if I talk about the center, this center has डिपॉजिट हो गए हैं, एंड इट इज हार्ड स्ट्रक्चर नाउ, और दो सेल्स वहां पे अलग अलग सेल्स कनेक्टेड होंगे, दैट इज बाय सीमेंट लेयर. जस्ट इग्नोर दैट, नोबडी इज गोइंग टू आस्क अबाउट दैट लेयर. जो मैं बता रही हूँ उस पे फोकस करो. ओके, नाउ इन द सेंटर देयर आर थ्री स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट. मतलब only a canal like structure present known as Haversian canal. This Haversian canal is actually the space, it is like this, और इसके अंदर तीन चीजें प्रेजेंट है, 1 2 3. वो थ्री चीजें क्या है? ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फ वेसल. ब्लड वेसल्स ऑफ कोर्स जो ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं. नर्व्स मींस वहां पे न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स प्रेजेंट होंगे. एंड लिम्फ वेसल जो लिम्फेटिक फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं. लिम्फेटिक फ्लूइड हमारी बॉडी में एक व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है बच्चा, जिसके थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड होता है. ये लिम्फ के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बस जस्ट रिमेंबर दिस Haversian canal, it is going to have blood vessel, nerves and lymph vessels. Ignore this plus minus and everything, don't worry about that. जो मैं बता रही हूँ just focus on those things. I have taken this diagram from the Google, तो इसमें कुछ extra चीजें भी हो सकती हैं, don't focus on that. Okay, don't focus on the sign. Osteocytes are bone cells, Priyal. Arush, that is just the diagram. मैं जो बता रही हूँ just focus on that. Okay, just focus. So this Haversian canal that is present in the center, it has three things: the blood cells, the nerve cells, and the lymph vessel.
Now around this Haversian canal, the osteocytes are arranged, the bone cell, osteocytes are bone cells. These are arranged in concentric layer. These are arranged in concentric layer. Concentric layer means सिंगल सेंटर है, एक ही सिंगल कॉमन सेंटर है और उसके अराउंड बहुत सारे सर्कल्स प्रेजेंट है. तो कॉमन सेंटर कौन सा हो गया? हैवर्शियन कैनाल, और उसके अराउंड बहुत सारे सेंटर्स प्रेजेंट, बहुत सारे सर्कल्स प्रेजेंट है. तो दिस बोन्स आर अरेंज्ड इन सर्कुलर लेयर्स. These layers are known as lamellae. These layers are known as lamellae. Okay, so as you can see, these are the layers and these layers have osteocytes in them. This black portion ये क्या होगा? Lacunae, and lacunae के अंदर osteocyte present होगा. Okay, now this osteocyte, अगर मैं एक bone cell बनाऊं ऐसे, these osteocytes has minute canal like structure. बहुत ही छोटे छोटे minute canal like structure होते हैं. These tiny canals are known as canaliculi. तो देखो ये सब कैनाल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक बोन सेल से दूसरे बोन सेल्स में कनेक्ट हो रही हैं. सो दिस कैनिकुलाई दे आर देयर एक्चुअली फॉर द passage of material in between two cells. So इंटरसेल्यूलर मूवमेंट के लिए प्रेजेंट है. कोई भी सेल, कोई भी न्यूट्रिएंट एक सेल से दूसरे सेल पे जा सकता है. So is it clear everyone? एक बार फिर से देखते हैं. Yes, even food and water, nutrients का, क्योंकि देखो बच्चा, the blood vessel, nutrient किसके थ्रू आने वाला है? ब्लड के थ्रू, and blood vessel is present just in the center in the Haversian canal. So यहाँ से जो न्यूट्रिएंट रिसीव होगा वो कौन से सेल्स करेंगे? ये सेल रिसीव करेंगे, and these cell will further send it to this cell and this cell through this canaliculi only. That is why they are connected. Okay, so this is the basic structure. Now read out this. एक बार फिर से देखते हैं. The Haversian canal is the canal that is present in the center. It has three things. कौन कौन सी? Blood vessel, nerves and lymph vessel. Around this Haversian canal, the osteocyte is present in the circular manner in concentric layers known as lamellae. And inside this lamellae, in concentric layers, the bone cells are present in the cavities known as lacuna. So lacuna is the space that contains osteocyte. So osteocytes of the bone cells, these are present inside this lacuna. And these osteocytes, they have tiny canal-like processes known as canaliculi that provide the function of movement of substances among these cells. Okay, so now can you understand this particular line, the last line? See what is written here. The matrix form thin plates called lamellae around the structure Haversian canal. In the lamellae, minute bone cells are present, and canaliculi are the minute processes of osteocyte. Means bone cells से minute processes निकल रहे हैं. And this whole structure that I have described you is known as osteon. So there can be one osteon, two osteon, three osteon, ऐसे करके बहुत सारे osteon present होंगे, and that is how the bone tissue is formed. Clear everyone? Now understood clearly. Thank you. So just note it down. I'm giving you the time. Now note it down and then let me know once you are done. See this diagram, bacha. Done also. Very good. Even do the diagram. Very nice. See this diagram.
This is the structure of bone, the anatomy of bone. But Yash, the ligament, it is not present in between the bone cells. It is present in between the bone. Means कैसे? देखो, लेट्स से ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है. ओके, सो बोन के अंदर यहाँ पर बोन सेल्स प्रेजेंट हैं जो बोन बना रहे हैं. बट लिगामेंट विल बी प्रेजेंट हेयर. ओके यश? Yes, Purti, you are correct. Sorry, Manthan. Yes, you are correct. Bone slide फिर से दिखाऊं? Okay. ये रहा. Note it down. Purti, done, बच्चा. Just let me know once you are done. So can you see this image in front of you, everyone? आदित्य, वो डायग्राम जो मैंने आपको बताया ना, वो बस समझने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लो, रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो और उसमें बस मेंशन कर लो व्हाट इज हाइवर्शियन कैनाल, व्हाट इज लैमेले, व्हाट इज ऑस्टियोसाइट, सो दैट आप यू विल बी एबल टू रिमेम्बर. ओके बच्चा, लक्यूनी इज प्लूरल एंड सिंगुलर का फर्क है बस. लक्यूना और लक्यूनी इज वन एंड सेम थिंग. Okay, those students, please everyone, I was explaining this bone part. It has two parts, spongy bone and the compact bone. So actually initially जो long bones होते हैं उसमें spongy bone बनता है and then spongy bone it gets converted into the compact bone. Okay, so spongy bone doesn't have this perfect structure of osteon and Haversian canal and everything, as you can see here in the diagram. स्पॉन्जी बोन में परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता. द परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टियन इट इज फॉर्म्ड इन द कॉम्पैक्ट रीजन ऑफ द बोन and this spongy bone it is generally present in the longer long bones. So long bones, let's say हमारा thigh bone है, तो यहाँ पर और यहाँ पर एंड बोन्स में एंड पार्ट ऑफ दिस लॉन्ग बोन्स है स्पॉन्जी बोन्स एंड बीच में प्रेजेंट होता है कॉम्पैक्ट बोन.
Okay. So just to give you a brief idea, it is not in your syllabus. I'm just giving you a brief idea that this Haversian system, this particular bone system that I've explained you, it is found in the compact bone. So yes, those students who don't have any doubts, they are free to leave. Bye-bye. Take care. Good night. Diagram. Yes, wait. Here it is. Thanks, Harshil. Bye-bye. Samriddhi, spine and backbone are not same. Backbone is made up of bones, and spine is made up of nerves or the neurons. ठीक है, तो nerves से nervous tissue is actually present in spine, and this spine is actually get a protective layer in the form of backbone. So backbone is the protective layer of spine. Spine is made up of nervous tissue, while backbone it is made up of bones. No बच्चा, Haversian canal is different as bone marrow. Bone marrow में तो fat tissue present होगा, areolar tissue present होगा, वहां पे आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा होगा. So वो प्रेजेंट होता है, जो कॉम्पैक्ट बोन होता है उसके बीच में अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, that makes bone marrow. Yes, Abhiram, you are free to leave the class if you don't have any doubt. Bachcha, take care. Bye bye.